आणि आता एक महत्त्वाची बातमी, कारण डॉक्टरांनी पुकारलेला संप आता अधिकच चिघळणार आहे। होमिओपॅथी डॉक्टरांच्या नोंदणीला डॉक्टरांनी विरोध दर्शवलाय। आजपासून मुंबईत आणि राज्यात या संपाला सुरुवात झाली। उद्यापासून हे आंदोलन पूर्ण राज्यभर आणि अधिक तीव्र करण्याचा इशारा MBBS डॉक्टर संघटनेने दिलाय। वैद्यकीय शिक्षण विभागासोबतची बैठक निष्फळ ठरली आहे। मंत्रालयामध्ये झालेल्या बैठकीत तोडगा निघालेला नाही। आंदोलन तीव्र झाल्याने आता त्याचा फटका अनेक रुग्णांना बसणार आहे। तिकडे शासकीय रुग्णालयातील ॲलोपॅथी डॉक्टरांनी सेवा बंद केली तर उद्या शासकीय रुग्णालयाच्या समोर जाऊन मोफत सेवा देणार अशी भूमिका होमिओपॅथी डॉक्टरांनी घेतली आहे। होमिओपॅथी चिकित्सक संघटना आणि BHMS डॉक्टरांनी भेदभावाला सामोरं जावं लागत असल्याचं म्हटलं। MBBS डॉक्टरांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणं हा त्यांचा उद्देश नाही, तर सरकारनं ठरवलेल्या नियमांनुसार त्यांच्या पात्रतेनुसार वैद्यकीय व्यवसाय करण्याची परवानगी मिळवणं असं असल्याचंही त्यांनी म्हटलंय। मसला था, इतना कोई किसी की जानलेवा ये मसला नहीं था। ये हमारे साथ बातचीत चर्चा करके भी हल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से रात को एक रजिस्ट्रेशन दे दिया है, ये BHMS CCMP डॉक्टर को MMC पे जो रजिस्ट्रेशन दिया है उसका सबसे पहले तो हम निषेध करते हैं और हम गवर्नमेंट को और मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर को मांग करते हैं कि आज की आज वो जो रजिस्ट्रेशन दिया है वो वापस ले लो, नहीं तो आज से हम जो माड़ IMA और पूरा जो मेडिकल संगठन है, हम जो बेमुदत काम बंद आंदोलन को जा रहे हैं, ये आज हम बेमुदत काम आंदोलन पे है। कल से हम पूरा जो हमारे जो इमरजेंसी सर्विसेज है, आपातकालीन सेवाएं, वो भी हम बंद करने वाले। और नहीं, अभी आज जो हमारे मॉडर्न साइंटिफिक मेडिसिन की अगली पीढ़ी है, जो हमारे घर के बच्चे हैं, उनको अगर ये मिक्सोपैथी को अगर बढ़ावा देंगे तो उनका भविष्य जो है वो अंधकार में उनको दिख रहा है। वो बेचारे नीट इतनी टफ है एग्ज़ाम ऑल इंडिया लेवल पे, वहाँ पे काम करके जब उनको प्रवेश मिलता है MBBS में, उसके बाद फिर से नीट दे के वो PG करते हैं और आखिर में कोर्ट का कहना यह है कि कार्डियोलॉजी की प्रैक्टिस कार्डियोलॉजिस्ट ने करना है, MD मेडिसिन को नहीं करना है। इकडे BHMS डॉक्टरांना CCMP कोर्स पूर्ण केल्यानंतर महाराष्ट्र मेडिकल काउन्सिलमध्ये नोंदणी देण्याच्या प्रस्तावाच्या निषेधार्थ ठाण्यात देखील आंदोलन करण्यात आलं। मार्ड संघटनेकडून कळव्याच्या छत्रपती शिवाजी महाराज रुग्णालयाच्या इथे वैद्यकीय सेवा बंद करण्याची हाक देण्यात आली आहे। मागणी मान्य झाली नाही तर आपत्कालीन सेवा सुद्धा बंद केल्या जातील असा इशारा मार्डने दिला आहे।